we were discussing about compaction. So, what is compaction? Compaction is an 8 cell stage. Here, there is tight junction present between the cells and they seal off inside of a sphere. It means that the number of cells that have divided after cleavage, when it is 8 cell stage, they are present in compaction, that is in compact form, and this is due to the tight junction present in the cells. And so the cells, they are in form of sphere. Then comes the next stage in development, that is called the morula. It is a 16 cell stage. A small group of internal cells are present, and these internal cells or blastomeres are called the ICM, that is inner cell mass. ICM in course of development will later form the embryo proper, and there are cells present covering the ICM. They are larger group of external cells, and these will later form the trophoblast. They are also sometimes referred to as trophoectoderm. This will later on form the extra embryonic structures. That is, they will form the placenta, which secretes hormones causing the uterus to retain the fetus. And we all know that during early stage of development, one important hormone is secreted, which is detected during the pregnancy test, and that hormone is called the human chorionic hormone. So the next stage is cavitation. The trophoblast secretes fluid into morula via sodium pump. This creates a blastocele. The hydrostatic pressure pushes the inner cell mass to one end. Now, the morula is changed into a second stage, that is the blastula, via a process called blastulation. Now, after that, the zona pellucida, that is the membrane or the covering of the egg, it prevents adhesion to uterine wall. That is, a premature adhesion is stopped if by any means the blastula adheres to the uterine wall prematurely, then the pregnancy is termed as ectopic pregnancy. The trophoblast attaches
to the uterine wall and forms the chorion, embryonic portion of the placenta. Now, what is meant by ectopic pregnancy? When the blastocyst, if instead of accommodating itself properly inside a specific uterus space, if it adheres anywhere outside the uterus, maybe in the oviduct, maybe at the periphery of uterus, anywhere but not at the proper assigned place in the uterus, then that pregnancy is termed as the ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy is very a risky type of pregnancy, and in most of the case it can lead to an abortion. So the trophoblast secretes enzymes like protease, which digests the uterine ECM. Blastocyst then implants into the uterus. This is known as the blastocyst hatching and implantation of the blastocyst. The inner cell mass forms the embryo proper, and it also forms yolk sac, allantois, and amnion. After this stage, that is, after the implantation of the blastocyst into the uterine wall, the next stage in the development occurs, and it is the formation of anterior posterior axis. The anterior posterior axis has been most elaborately studied in mouse. In mouse, the epiblast is the cup-shaped structure, while in other mammals, particularly humans, they are disc-shaped. The outermost layer of an embryo, before it differentiates into ectoderm and mesoderm, is what epiblast is. That is, we can say that epiblast is the outermost layer of an embryo before it differentiates into ectoderm and mesoderm. In amniotes, the epiblast will form two distinct layers arising from the inner cell mass. For the formation of anterior posterior axis,
there are two signaling centers, one in the node, the organizer, and the other in the anterior visceral endoderm. Node is responsible for the formation of all body parts. The two signaling centers are said to be responsible for the formation of the brain. Node produces chordin and noggin, which are not produced by anterior visceral endoderm, while the anterior visceral endoderm expresses several genes that are necessary for head formation. These include the genes for transcription factor, like HESX1, LIM1, OTX2, as well as the genes for paracrine factor, Cerberus. The node appears to be responsible for the creation of the body, and the two signaling centers, that is the node and the anterior visceral endoderm, are responsible for the formation of anterior region of the embryo. The position of two signaling centers appear to be regulated by the interaction between the epiblast and the extraembryonic membrane. The anterior visceral endoderm is established before the formation of node, and the pyramidal streak always formed on the side of epiblast
opposite to this anterior side. अब तक जो हमने डिस्क्राइब किया है वो है एक्सिस फॉर्मेशन इन मैमल्स। एक्सिस फॉर्मेशन में सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन हम स्टडी कर रहे हैं और इसके लिए दो सेंटर्स सिग्नल्स सेंड करते हैं सेल अदर सेल्स के लिए, क्योंकि एक्सिस फॉर्मेशन इट हैपन्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज़ जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। इसके क्लीवेज के बाद कई सारे जो स्टेप्स हैं जैसे मॉर्यूलेशन, ब्लास्टुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एज वेल एज इट्स इम्प्लांटेशन। जब यहाँ तक हमारा एम्ब्रियो पहुँच जाता है, इसके बाद दो सेंटर्स बनते हैं, दो ऑर्गेनाइजिंग या सिग्नलिंग सेंटर्स, और इन सेंटर्स से सिग्नल्स एमिट आउट होते हैं, सिग्नल्स निकलते हैं जो कि एनिमल का एंटीरियर यानी कि अग्र भाग और पोस्टीरियर यानी कि पश्च भाग को डायरेक्ट या निर्देशित करता है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नोड में से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं या जो सिग्नलिंग या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो निकलते हैं, वो हैं कॉर्डिन, नॉजिन, जो कि हेड फॉर्मेशन या एंटीरियर जो रीजन है उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉर्डिन और नॉजिन केवल नोड सिग्नलिंग सेंटर या जिसको हम ऑर्गेनाइज़र कहते हैं वहाँ से रिलीज़ होता है, और ये केवल नोड के द्वारा ही रिलीज़ किए जाते हैं। जो हमारा सेकंड सिग्नलिंग सेंटर है एंटीरियर विसरल एंडोडर्म, जिसको कि हम AVE रेफ़र करते हैं, इसके द्वारा नॉजिन और कॉर्डिन का रिलीज़ नहीं होता। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसके द्वारा जो स्ट्रक्चर्स हैं एनिमल बॉडी के, जैसे कि फ्रॉम स्फीयर, जो डेवलपमेंट है वो एक स्फीयर से स्टार्ट होता है, एक सर्कुलर मास या बॉल ऑफ सेल्स से स्टार्ट होता है। तो आफ्टर पासिंग सेवरल स्टेजेस, आफ्टर नंबर ऑफ डिविजन्स, सेल्स जिस अवस्था में पहुंचते हैं उसके बाद उनका एक्सिस निर्धारण इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के द्वारा होता है। अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि एंटीरियर रीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं HESX1, LIM1, OTX1। तो हम ये कह सकते हैं कि नोड produces cordon and nodin, और AVE expresses several genes that are necessary for the head formation. AVE also expresses genes for paracrine factors like Cerberus. Now, in continuation with the formation of anterior and posterior axis, we see that AVE functions in the epiblast to restrict the nodal signal
thereby allowing the anterior genes to be expressed in the anterior portion of the embryo or epiblast. Once the gastrulation has begun, the anterior posterior polarity in all the vertebrates becomes specified by the expression of Hox gene. We have studied about Hox gene while we were discussing the limb development in tetrapod. जब हम टेट्रापॉड के अंदर लिम्ब का डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे तब हॉक्स जीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हॉक्स जीन है क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं, इनके 4 क्लस्टर्स हैं, हॉक्स ए, हॉक्स बी, हॉक्स सी और हॉक्स डी। और ये जो क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं ये सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हम इनको प्रिमिटिव टाइप ऑफ जीन कह सकते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स से लेकर लार्ज एनिमल्स तक होते हैं। डिफरेंस इनमें नंबर ऑफ हॉक्स जीन का हो सकता है। किसी ऑर्गेनिज्म में फॉर एग्जांपल हाइड्रा में हॉक्स जीन की नंबर हो सकता है 4 हो और हायर एनिमल्स में हो सकता है हॉक्स जीन की नंबर 40 हो। तो नंबर के अंदर नंबर ऑफ हॉक्स जीन्स के अंदर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये एक प्रिमिटिव जीन है जो कि एवोल्यूशन के दौरान एनिमल्स के सेगमेंटेशन को या एनिमल्स के एक्सेस फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो वी कैन से दैट जब गैस्ट्रुलेशन हो जाता है और एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी स्पेसिफिक हो जाती है हॉक्स जीन के एक्सप्रेशन के द्वारा। हॉक्स जीन्स आर होमोलोगस टू होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स ऑफ फ्रूट फ्लाई। दूसरा, हमने जब एक्सेस स्पेसिफिकेशन इन ड्रोसोफिला स्टडी किया था तब उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर set of genes which get activated one after another। एक्सेस स्पेसिफिकेशन जब ड्रोसोफिला में हमने किया था उसमें 3 इम्पॉर्टेंट टाइप के जीन्स मैंने आपको बताए थे जो एक के बाद एक एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले हमारे कुछ जीन्स थे जो कि मदर के साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे जीन्स फॉर बाइकॉइड एंड नॉजन जीन्स। और फिर हमारे थे सेगमेंट जीन्स जो कि आफ्टर मैटरनल जीन्स के एक्टिवेशन के बाद जो एक्टिव होते हैं, और वो सेगमेंट जीन्स थे गैप जीन, पेयर रूल जीन्स एंड सेगमेंटेशन जीन्स, जो कि एनिमल्स के अंदर फर्दर सेगमेंटेशन करते हैं। बाइकॉइड और नैनोज जो मैटरनल जीन्स थे, ये जीन्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो या एग और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो को डिसाइड करते हैं। बाइकॉइड एंटीरियर रीजन में कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है और नैनोज़ की पोस्टीरियर रीजन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर नैनो की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो रीजन हमारा पोस्टीरियर एंड है, और जहाँ बाइकॉइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो रीजन हमारा एंटीरियर एंड था। तो ये हमारे मैटरनल जीन्स थे। फिर इसके बाद हमारे सेगमेंट जीन्स थे जिन्होंने एक बार एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के स्पेसिफाई हो जाने के बाद इन्होंने सेगमेंटेशन स्टार्ट किया। बड़ा सेगमेंटेशन जैसे हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन,
ये जो लार्ज सेगमेंटेशन है इट वाज डन बाय द गैप जीन्स, और फिर पेयर रूल जीन्स जो कि सेगमेंट को इन पेयर्स फॉर्मुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। इसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ जीन्स थे होमियोटिक जीन्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक एंटिनिपीडिया कॉम्प्लेक्स और दूसरा बायथोरेसिक कॉम्प्लेक्स। इनमें भी कई सारे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे एब्डोमेन, थोरैसिक सेगमेंट्स, अपेंडेजेस जैसे कि प्रोबोसिस, लेबियल, एंटेना, विंग्स एक्सेट्रा को डायरेक्ट करते हैं, को निर्देशित करते हैं। तो ये होमियोटिक जीन्स थे। और जिस प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स, एंटिनिपीडिया कॉम्प्लेक्स और बायथोरेसिक कॉम्प्लेक्स, जिनमें सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं, वैसे ही यहाँ पर मैमल्स के अंदर भी हॉक्स जीन प्रेजेंट हैं, एंड दीज आर homologous to the homeotic gene complex of Drosophila. The homes C are arranged in the same order as in Drosophila. तो जिस प्रकार से ड्रोसोफिला के अंदर इन जीन्स का अरेंजमेंट है, ठीक इसी तरीके से मैमल्स में भी इन जीन का अरेंजमेंट है. As their expression pattern along the anterior posterior, the most three genes being required for producing most anterior structure and the most 5 genes specifying the development of posterior abdomen. जिस तरीके से हमारे बायथोरेक्स जीन के अंदर 3 जीन्स थे और एंटिनिपीडिया कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 सेट ऑफ जीन्स थे, जिनके एक्टिवेशन से जो फर्दर सेगमेंटेशन के बाद जो अपेंडेजेस फॉर्मेशन है उनका डायरेक्शन हुआ था, ठीक इसी तरीके से मैमल्स के अंदर ये होम सी जीन्स जो हैं एंटीरियर पोस्टीरियर स्पेसिफिकेशन को डायरेक्ट करते हैं. माउस एंड ह्यूमन जीनोम कंटेन 4 कॉपी ऑफ हॉक्स कॉम्प्लेक्स पर हैप्लॉइड सेट located on 4 different chromosomes. और माउस और ह्यूमन के अंदर हॉक्स जीन कॉम्प्लेक्स की 4 कॉपी प्रेजेंट होती है, यानी एक क्रोमोसोम के अंदर 4 कॉपी और दूसरे क्रोमोसोम के अंदर 4 कॉपी. तो वी हैव 4 सेट ऑफ हॉक्स जीन्स present on 4 different chromosomes. The mammalian Hox gene are numbered from 1 to 13, starting from that end of each complex that is expressed more anteriorly. वो जीन्स जो सबसे पहले एंटीरियर में एक्सप्रेस होते हैं उनको हम नंबर देते हैं पीछे से. The equivalent genes in which mouse complex such as HOXA1, HOXB1, HOXD1 are called the paralogous chromosomes. और वो क्रोमोसोम्स जिनमें जीन्स प्रेजेंट हैं माउस कॉम्प्लेक्स के, तो उनको नाम दिया गया है स्मॉल लेटर्स में HOXA1, HOXAB1, HOXD1. मैमल्स या ह्यूमंस के अंदर ये कैपिटल से हमने एग्जिबिट किया था, ह्यूमंस में कैपिटल में और माउस के अंदर स्मॉल में. The expression of Hox gene. Now, once the gastrulation begins, the anterior-posterior polarity in all vertebrate, they become specified by the expression of Hox genes. As I have said that the Hox genes are homologous to the homeotic selector of fruit fly.
The Hox gene expression can be seen along the dorsal axis in the neural tube, neural crest, paraxial mesoderm, and surface ectoderm from the anterior boundary of the hindbrain through the tail. हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन हमें डॉर्सल एक्सिस में देखने को मिलता है एंटीरियर बाउंड्री ऑफ hindbrain से tail तक. The Hox gene expression is said to be the reason for specifying the different regions. और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट भाग या रीजन्स बनते हैं उसके स्पेसिफिकेशन के लिए हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता है. इन जनरल द जीन्स ऑफ पैरालोगस ग्रुप 1 are expressed from the tip of that tail to most anterior border of the hindbrain. Two genes are expressed throughout the spinal cord, but the anterior limit of expression stops to segment more caudally than the paracrine paralog gene 1. The higher numbered Hox paralogs are expressed solely in the posterior region of the neural tube, where they also form a nested set. So to sum up, we can say that there are specific genes like nogen, cordon, HESX1, LIM1, etc., cerebrus, then Hox genes. These all genes work in cascade manner, work in orchestration, that is one after another, to specify the anterior and posterior region of the animal. The second specification of axis is called the dorsal ventral specification. Very little is known about the mechanism of dorsal ventral axis formation. The hypoblast form on the side of inner cell mass that is exposed to the blastocyst fluid forms the ventral axis, while the dorsal axis is formed from those inner cell mass that are in contact with the trophoblast. So we can say that that side of the inner cell mass that is exposed to the blastocyst fluid will form the ventral axis, while those cells that are in contact with the trophoblast will form the dorsal axis. The dorsal ventral axis of the embryo is in part defined by embryonic axis of the blastocyst. Now this is the diagram. Closely on observing this diagram, we can see that there is an embryonic pole, there is embryonic pole, and we can say that the dorsal ventral axis is defined by
the embryonic and abembryonic axis of the blastocyst. The figure is showing the relationship between animal and vegetal axis of the egg and the embryonic and abembryonic axis of the blastocyst. That part which has got the cytoplasm and the nucleus is called the animal pole, and that part which has got concentration of yolk, most of the yolk concentrated at one end, that end is called the vegetal pole. The polar body marks the animal pole of the embryo. The dorsal ventral axis of the embryo appears to form at right angle to the animal vegetal axis. The embryonic region contains the inner cell mass, while the embryonic region is that part of the blastocyst that is opposite to the inner cell mass. The placement of the inner cell mass appears to be specified by the point of sperm entry. One cell of the first two blastomere seems biased to become inner cell mass, while the other appears to be biased to form the cells of trophoblast. Now, there are during development few cells initially that are destined, designed to become inner cell mass, and there are other cells which are destined or designed to form the trophoblast. The notochord maintains dorsal ventral polarity by inducing specific dorsal ventral pattern of the gene expression, or we can say that there is a memory of first cleavage in our life. When first cleavage occurs, that is, one cell becomes two, then in the initial two cell stage, these cells have memory of how they have to divide further into formation of several different structures or organ. It is in their cytoplasmic memory. Now the third is the formation of left and right axis. The mammalian body, we know, is not symmetrical. The human heart, though, lies in the midline, but it moves to the left side of the chest cavity and loops to the right. Similarly, the spleen is found solely on the left side of abdomen. Ovaries are present on the left side. Major lobes of the liver is major lobe of the liver is seen in the right side of the abdomen, while the large intestine it loops right to left. The right lungs has more lobe than the left lung. Study of right left specification is done, or rather it was done in mouse by studying the mutations.
The distinction between left and right side of the axis formation begins in the ciliary cells of the node. Now, uh, which part will become the right part, which part will become the left part in a sphere? It starts right in the node by the ciliary cells present in the node. Mutation in mouse have shown that there are two levels of regulation of the left and right axis. First, a global level. Second, organ specific level. How we can find out the mechanism of axis formation in mouse in reference to right or left? We know this by observing the mutations of